It's a saying that hard work always pays off. So keep striving for the success. Work hard, be dedicated, be honest with your preparation, and the perseverance, honesty, and hard work always pays off. Hello, ladies and gentlemen, and welcome to yet another episode of Chamomile Tea with Toppers, an initiative by Unacademy, and I'm your host, Rishabh. Today, we have with us on the show Mr. Siddhartha Pathak, who has cleared the UPPSC examination of 2019 and secured the ninth rank, which is a phenomenal achievement. He's here with us on the show and is looking forward to share a little bit about his journey and his preparation strategies for all you aspirants out there. So let's meet Siddharth. Hey, Siddharth, welcome to the show. How are you doing? Thank you, and I'm doing good. I'm good. Thanks for welcoming me in this show. Right, Siddharth. So tell us, how does it feel to have achieved this remarkable feat, of this rank that you've achieved and the exam that you've cleared? Kaisa lag raha hai? What are your parents saying? What are your friends saying? What is the reaction all around? Yeah, everyone was. I mean, me myself was very surprised on seeing this result because I wasn't expecting this ninth rank in the exam, and everyone was so happy when the results were announced. I went for a walk, and then when I came back, I came to know that the results are announced. So I downloaded the PDF, and I thought I would be selected. Maybe if I get selected, I would be having some 200 or something rank, but I found my name in the first page itself on the ninth rank. So I was a bit surprised and I was shouting, and I went to my mom directly, and everyone was so happy. I called my sister and some of my friends. And then, yeah, it was a celebration all around. People were congratulating me, newspaper, media, everything was there. So, yeah, it was a great experience, great day of my life. That's wonderful to hear, and congratulations to you for that. And Yeah, ये thanks काफी again. लंबी journey रही है आपके लिए. So tell me, what is the role that your family and your friends have played in it, in your success? या इट वाज अ लॉन्ग जर्नी लाइक मैंने 2017 में स्टार्ट किया था जब मैं पास आउट हुआ था कॉलेज से देन मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए आया था बेसिकली एंड देन आई गेव 2018 prelims but I couldn't clear it and then I gave the UPPSC prelims in 2018 also and I could not clear it. I was a bit demotivated at that time, but then and I had a tragic incident too in that time. Like in 2018 I lost my father in a metro accident, so it was a bit hodgepodge kind of situation for me. But then my mother and my sister, they helped me a lot. They always stood by myself and they helped me a lot in these difficult times of my life. And like my sister and my mother took all the responsibilities so that I do not get burdened up with all these familial responsibilities and focus on my studies. So I would say they played a huge part in this success of mine. Right, and more power to you. जो भी आप whatever you have gone through, and you've come out on top as a champion despite all that. So kudos to you for that. Siddharth, tell me a little bit about your background. आपके family, आपके education के बारे में थोड़ा बताइए. Okay, so I belong to a middle class family. In my family, I have my sister and mother, and my father was a forest range officer in Uttar Pradesh forest. So फिर मेरी जो background schooling थी from class, I live in Varanasi. So and then मेरी background schooling जो थी class first से लेके class 8 तक ये सरस्वती शिशु मंदिर एक स्कूल की चेन चलती है आरएसएस की, तो मैंने वहां पे किया था. देन फ्रॉम 9 to 12th आई स्टडीड इन अ गवर्नमेंट स्कूल इन वाराणसी इटसेल्फ, and then in 2013 I cleared the JEE exam, and then I got selection in IIT BHU in civil engineering. So I did my graduation from there, BTech in civil engineering, and after that since then I'm preparing for these exams, competitive exams. राइट, तो अभी अभी आपने मेंशन किया कि आपने यू गॉट एडमिशन एट आईआईटी बीएचयू और आपने सिविल इंजीनियरिंग की वहां से. सो व्हाट प्रॉम्प्टेड यू टू गेट इनटू प्रिपरेशन फॉर सिविल सर्विसेज? आपने अपनी ये लाइन चेंज क्यों की? बिकॉज
once it's one of the prestigious institutions of the country, and normally you'd expect कि once someone graduates from there, they will take up a job. But you've decided to, get into competitive exams and start studying. So what prompted that? एक्चुअली जब मैं कॉलेज में गया था, सो लाइक अ नॉर्मल 12th क्लास स्टूडेंट, आई वांटेड टू बी इन द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया, सो आई gave that exam. Gave that exam and got selected to IIT. But this thing was clear in my mind that I don't want to get into private sector. So मेरा जो एम था वो था फॉरेन से मास्टर्स करने का, GRE दे के फिर MS करने का था. And I also got an opportunity in the third year of my BTech to go to a foreign internship, research internship. So I went there, I stayed there for 3 months. I did my research, but somehow there I realized that okay, I'm not very much I mean, my interest does not cater too much in this field. So then I thought, okay, I'll do something else. Civil services examination preparation was a substantial thing for a engineering graduate from IIT. So I thought this is the next big step I could take in my life. So that's why in the 4th year of my BTech, I thought I'll go for the civil services. Right. And थोड़ी देर पहले आपने mention किया that you had written the UPSC CSC exam and the UPPSC exam के prelims, and you did not clear that, but eventually you ended up clearing it. So what do you feel, was the difference in your preparation the first time and the second time that you were able to do a much better job? आपके हिसाब से क्या आंसर है? Actually, जब मैं preparation करने आया था, तो so I had no idea about like I mean I was not so good in general studies. मतलब to be very frank, मुझे ये भी नहीं पता था लोकसभा राज्यसभा is two different things. President की क्या powers होती हैं? I had no knowledge at all. So from the very beginning, I was a science background student. तो मेरा हिस्ट्री ज्योग्राफी इनमें इतना इंटरेस्ट था नहीं. सो मुझे बिल्कुल ही स्क्रैच से शुरू करना पड़ा था 2017 में. सो I prepared well, but in the first attempt I could not practice much MCQs and practice much of the questions, or did not write too many mock tests. So इस वजह से like जब मैं एग्जाम हॉल में गया तो I was a bit surprised because I could attempt only 35 or 40 questions out of the 100 in my first go. So I was a bit you can say demoralized at that time. So and then the exam जो थी वो मेरे ऊपर ज्यादा हावी हो गई rather than मैं एग्जामिनेशन पेपर के ऊपर हावी हुआ. So वहां पे थोड़ी सी मिस्टेक्स हो गई थी मुझसे. So जब मैं सेकेंड टाइम एग्जाम दे रहा था तो I made sure that before the prelims I could attempt at least 20-30 mocks, at least 20-30 mocks. So because of that, I think this one thing was lagging in my first year of preparation, and I did it in the second attempt. So in the second attempt I could clear UPSC prelims also and the UPPSC prelims also. Right, that's fantastic. और अभी आपने मॉक्स के बारे में बात की. So tell me a little bit about आपने मॉक्स कितने सारे दिए थे, कितने अटेम्प्ट किए, and initially आपके स्कोर्स कैसे आ रहे थे, and eventually how did you build up those scores? मॉक्स मैंने जो विजन आईएएस है, विजन आईएएस के मैंने पूरी टेस्ट सीरीज उनकी करी थी. सो उसमें अराउंड 35 मॉक्स होते हैं. तो उसमें इनिशियल मॉक्स जो होते हैं वो अपने सेक्शन वाइज होते हैं, और लास्ट के 10 या 15 उनके फुल लेंथ टेस्ट होते हैं. तो इनिशियली यस, थोड़े बहुत मार्क्स आपके कम रहते हैं बिकॉज आप प्रिपरेशन फुल फ्लेजेड प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में नहीं रहते हो. सो शुरू में थोड़े बहुत कम हो रहे थे, बट मैंने अपना मेन फोकस जो दिया था लास्ट के जो 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट होते हैं उन पे, और वहां पे मतलब मैं पूरा पेपर मतलब मैं कोशिश करता था कि मैं एटलीस्ट 90+ क्वेश्चंस इन मॉक टेस्ट में अटेम्प्ट करूं, बिकॉज मेरी एक्यूरेसी थोड़ी सी बुरी थी. तो मैंने अपने मॉक टेस्ट में आई मेड श्योर दैट आई अटेम्प्ट एटलीस्ट 90+ क्वेश्चंस, और फिर मैं एनालाइज करता था और ये देखता था कि मेरे कितने गेस वर्क्स वगैरह सही हो रहे हैं. So around I was scoring like 100+ in most of the mocks. Some of the mocks I was like 95, 97. Plus mostly मैं 100+ score कर रहा था. So I was confident for that attempt because I was scoring 100+ in the mock. Right, that's great. और अगर प्रीलिम्स की बात की जाए तो आपने इसके लिए कोई शेड्यूल बना के रखा था, in terms of the subjects that you wanted to study. And one more thing, क्या जब आप प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, did you also keep in mind the future exam, which is of course the mains, की आपका फोकस सिर्फ प्रीलिम्स पे था? नहीं, like
फर्स्ट अटेम्प्ट में तो जैसा मैंने बताया कि मुझे कुछ भी नहीं पता था, तो आई वाज स्टडिंग एवरीथिंग फ्रॉम द स्क्रैच। बट जब मेरा पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो लाइक नेक्स्ट प्रीलिम्स वाज ऑलमोस्ट अ ईयर, 1 साल के बाद था। सो इन द मीन टाइम मैंने मेंस की प्रिपरेशन करी, और लास्ट के जो 3 महीने थे वो मैंने 2 से 3 महीने जो थे उनको डेडिकेशन के साथ पूरा प्रीलिम्स पे फोकस रखा था। और उसके पहले मैं मेंस की प्रिपरेशन कर रहा था। मेंस में मैंने आई मेड श्योर कि मेरा ऑप्शनल की सारी नोट्स प्रिपेयर हो जाएं, ऑप्शनल रिवाइज हो जाए। देन जो कुछ जीएस के सब्जेक्ट जो स्पेसिफिकली जीएस में ही आते हैं प्रीलिम्स में, लैब प्रीलिम्स के साथ उनका ओवरलैप नहीं है, उनको मैंने खत्म किया। और बाकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के साथ मेंस की प्रिपरेशन भी होती रहती है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, ये सारी चीजें हमें पढ़नी होती हैं। राइट, बट फिर भी आप सजेस्ट करेंगे एस्पिरेंट्स को कि वो एक अच्छा सा शेड्यूल बना के रखे विच विल हेल्प देम इन देयर प्रिपरेशन? या आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट देम। मतलब ये इट इज अ शॉर्ट कमिंग इन माई सेल्फ कि मैं ये काम नहीं कर पाता हूँ। आई ट्राई टू डू इट बट आई कुड नॉट डू इट। सो बट यस, जो भी अगर कोई भी एस्पिरेंट ये करेगा तो डेफिनेटली उसके लिए अच्छा रहेगा, बिकॉज इससे होता ही है कि आपने एक टाइम टेबल बना लिया, तो आप अपने आपने कितना प्रिपरेशन करी है इस पे आप एक ट्रैक भी रख सकते हैं, और आप वेल प्लान्ड तरीके से अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा भी सकते हैं। तो अभी या प्रीलिम्स की बात करें तो मुझे ये बताइए आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या थी, व्हेन इट कम्स टू जीएस एंड व्हेन इट कम्स टू सीसैट। तो आपने कैसे अपना प्रिपरेशन डिवाइड किया इन दोनों के बीच में? हाउ डिड यू गो अबाउट द सब्जेक्ट्स दैट यू जस्ट मेंशन्ड, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड द अदर सब्जेक्ट्स? एंड प्लीज टेल मी आल्सो द बुक्स दैट यू रेफर टू फॉर ऑल ऑफ दीस सब्जेक्ट्स। सो मैं मोस्टली यूपीपीएससी के बारे में बताता हूँ। आई गेस मोस्टली सेम ही हो गए हैं अब तो दोनों। सो यूपीपीएससी में दो होते हैं, सीसैट और जीएस के प्रीलिम्स में एग्जाम्स। सो सीसैट जो है, क्योंकि मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था तो मैथ्स में मुझे ज्यादा कुछ प्रॉब्लम होती नहीं थी, तो मैं मैथ्स के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता था, और उससे मेरा सीसैट क्लियर हो जाता है। बट अगर कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का नहीं है, सो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट हिम कि थोड़े बहुत मैथ्स के क्वेश्चन करें, क्योंकि बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस आते नहीं है, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो हो जाएगा। साथ में यूपीपीएससी में आपके हिंदी के क्वेश्चंस भी आते हैं सीसैट में, तो हिंदी वाले क्वेश्चंस भी इजी होते हैं, तो उनको भी अटेम्प्ट करके इजीली क्लियर कर सकते हैं हम लोग सीसैट। सो हिस्ट्री में तो मैं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की बुक आती है, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, वो सफिशिएंट होती है। और साथ में एक घटना चक्र करके पब्लिकेशन है, घटना चक्र के नाम से, उनका एक हिस्ट्री का कंपाइलेशन आता है, जो डिफरेंट एग्जाम्स होती हैं इंडिया में उन सभी एग्जाम्स के क्वेश्चंस उसमें कंपाइल रहते हैं विद एक्सप्लेनेशन। तो अगर हम उनको उसको भी कर लेंगे तो थोड़ा फैक्ट बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं स्टेट पीएससी एग्जाम्स में, वो हमारे कवर हो जाते हैं। देन पॉलिटी के लिए तो अपने लक्ष्मीकांत इज द बाइबल, तो वही उससे आपका पॉलिटी का सब्जेक्ट कवर हो जाता है। ज्योग्राफी के लिए मोस्टली हम 9 टू 12 की एनसीईआरटीज अगर कवर कर लें तो दैट सफिशिएंट। उसके साथ थोड़ी बहुत जो लिस्टिंग्स होती हैं, लाइक हाईएस्ट माउंटेन कौन से हैं, कौन सा माउंटेन किस कंट्री में है, लॉन्गेस्ट रिवर, लार्जेस्ट रिवर, देन इन सब कहाँ कहाँ पे वॉल्केनिक माउंटेन्स हैं, कौन सा वॉल्केनिक माउंटेन कहाँ पे है, तो ये पोर्शन ज्योग्राफी में थोड़ी ये जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है ये तैयार कर लेनी चाहिए। देन इकोनॉमी ज्यादा कंसेप्चुअल नहीं पूछी जाती है यूपीपीएससी के प्रीलिम्स में। साइंस भी अभी मेजर कंट्रीब्यूटर हो गया है, अराउंड 15 टू 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उसके लिए लूसेंट की एक साइंस की अलग से बुक आती है, उसको करने से कवर हो जाता है साइंस। So अभी आपने बात की about books, that some of the books that you referred to, but were there any online sources also that you referred to? कोई ऐसे websites पे आप गए या कोई YouTube videos देखे that really helped you? ऐसा कोई platform था apart from the books that you referred to? Yeah, I used to refer to IS Baba a lot, especially for the prelims part. And there is one great initiative of IS Baba. It's called TLP, Think Learn something. Its name is. So they daily post 5 questions on a daily basis, and you can write the answers and put them on the comment box. तो वहां पे आपके आंसर जो हैं वो पीयर रिव्यू के थ्रू इवेल्युएट भी हो जाते थे, और दूसरों के आंसर्स पढ़ के अगर मेरे आंसर्स में कुछ कमियां हैं तो मैं उनको ओवरकम भी कर लेता था। तो और अदर देन दैट अनअकैडमी पे भी मैंने कुछ सर थे, उनके वीडियोस में फॉलो करता था। लाइक एक आतिश माथुर सर हैं, उनका वो अनअकैडमी पे व्हाट अ वीक एंड व्हाट अ डे के नाम से दो इनिशिएटिव चलाते हैं, जिसमें वो वीकली और डेली न्यूज को कवर करते हैं। सो आई यूज टू फॉलो दैट ऑन अ रेगुलर बेसिस टू।
राइट एंड अगर मेंस की बात की जाए, नाउ आपकी प्रीलिम्स तो ऑफ कोर्स वेंट ऑफ वेरी वेल, और अभी मेंस की बात की जाए तो सबसे पहले टेल मी, व्हाट वाज योर माइंडसेट गोइंग इनटू द मेंस? आपने इसके लिए कैसे प्रिपेयर किया? बिकॉज वन थिंग दैट रियली स्ट्रक आउट वाज द पैंडेमिक हिट एंड बिकॉज ऑफ व्हिच द मेंस एग्जाम हैड टू बी पोस्टपोन्ड। तो आपका माइंडसेट कैसा था गोइंग इनटू द मेंस एग्जामिनेशन? Yeah, I mean, the first wave of the pandemic was a very confusing and very confusing time for everyone and very disastrous too. तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि लाइक फ्यूचर में क्या है, एग्जाम्स कब होंगी, डिले होंगी या नहीं होंगी। तो मतलब फोकस कर पाना बहुत ही मुश्किल था उस टाइम पे। बट बिफोर दैट आई गेव द CST 2019 मेंस, तो उससे मेरा थोड़ा बहुत बैकग्राउंड अच्छा प्रिपेयर हो गया था मेंस के लिए। So during the lockdown time, since it was very uncertain, so I wasn't trying to force myself too much. मतलब मैं दिन में अगर डेली थोड़े बहुत टॉपिक्स भी कवर कर लेता था तो आई टुक इट एज अ बोनस। तो बात की जाए अबाउट टू टाइप्स ऑफ प्रोफेशनल्स, एक तो वो कैटेगरी के हैं दैट आर वर्किंग प्रोफेशनल्स, वेयर आर दोज दैट आर नॉन वर्किंग प्रोफेशनल्स। तो नॉन वर्किंग प्रोफेशनल्स के पास ऑब्वियसली दे हैव अ लॉट ऑफ टाइम ऑन देयर हैंड्स टू प्रिपेयर, बट फॉर द वर्किंग प्रोफेशनल्स आप क्या कहेंगे जिनके पास दे हैव टू मैनेज देयर ऑफिस वर्क अलोंग विद दिस प्रिपरेशन? हाउ डू यू थिंक दे कैन गो अबाउट प्रिपेयरिंग? Actually, I haven't faced that situation yet, and I guess I'm going to face that in upcoming 1 or 2 months because I'm still preparing for civil services, and I'm going to join my post of deputy collector in next month most probably. So I don't think I'll be able to answer that question yet. But yes, I think थोड़ा difficult तो होता होगा because time कम मिलता है। तो उसमें मतलब अभी तक मैंने जो खुद सोचा है अपने फ्यूचर के लिए वो यही है कि कभी कभार अगर आपको ऑफिस वर्क में आप थोड़े खाली हैं या जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, मेट्रो में हैं या ऑटो में हैं, तो उस टाइम पे आप जैसे यूट्यूब वगैरह पे करंट अफेयर्स के वीडियोस देख सकते हैं, तो आपका वो वाला टाइम यूटिलाइज हो जा रहा है। एंड देन आप ऑनलाइन रिसोर्सेज पे फिर आपको ज़्यादा रिलाई करना पड़ेगा। यू कैन यूज अ टैब, वहाँ से आप करंट अफेयर्स के PDF वगैरह पढ़ सकते हैं। I don't know how difficult it would be, but I mean, where there is a will, there is a way. Right, absolutely. Where there's a will, there's a way, and we definitely must follow that. So अभी अगर हम सब्जेक्ट वाइज जाते हैं, when it comes to the main examinations, तो सबसे पहले हिंदी के बारे में मुझे बताइए, बिकॉज जहां तक मैंने आपके बारे में पढ़ा है आपकी हिंदी तो काफी स्ट्रांग ही थी, बट फॉर दोस्त जिनकी हिंदी थोड़ी वीक है, हाउ डू यू थिंक दे कैन गेट बेटर एट? ये हिंदी का पेपर जो होता है UPPSC में वो 150 मार्क्स का होता है, और ये जो मार्क्स हैं ये फाइनल लिस्ट में एड अप होते हैं। तो ये मतलब मेक और ब्रेक योर कैरियर वाली सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि 150 मार्क्स काफ़ी मैटर कर जाते हैं। तो हिंदी में अगर हम लोग देखें तो अगर जिसका बिल्कुल ही हिंदी बैकग्राउंड नहीं है, ही और शी शुड मस्ट फोकस कि उसका जो राइटिंग जब वो कर रहे हैं तो वहाँ पे मिस्टेक्स कम हो। जैसे वो हिंदी में मात्रा की गलतियां हो जाती है ना, कि हम छोटे ई की मात्रा की जगह बड़े ई की मात्रा लगा दिए, स और श में कुछ गलत लिख दिया। तो ये सारी मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए एक आप ज़्यादा नहीं, डेली 15-20 मिनट भी आपने लिख लिया, तो ये चीज़ें आप डेली बेसिस पे 15-20 मिनट लिख के ये जो मिस्टेक्स हैं इनको ख़त्म कर सकते हैं। देखिए, तो इसको प्रिपेयर करना इतना टफ नहीं है। थोड़े स्मार्ट वर्क के साथ हम इसमें 18 मार्क्स आराम से गेन कर सकते हैं, क्योंकि एक इसमें अगर हम देखें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो एक तो हमारा पैराग्राफ आता है, पैराग्राफ के बेसिस पे हमें आंसर्स लिखने होते हैं, तो वो हम पैराग्राफ में से आंसर्स निकाल के लिख सकते हैं। वो 9th-10th में ज़्यादातर लोगों ने किया होता है स्कूल एग्जाम्स में। देन ग्रामर के कुछ पोर्शंस होते हैं, जैसे विलोम शब्द और मुहावरे होते हैं, और समानार्थी शब्द, इस टाइप की कुछ चीज़ें रहती हैं। कुछ सेंटेंसेस लिखे होते हैं, उसमें मिस्टेक फाइंड करनी होती हैं। तो ये वाले क्वेश्चन जो हैं ये भी इजी होते हैं। लाइक आप अराउंड 100 विलोम शब्द की एक लिस्ट जो है उसको डेली बेसिस पे एक बार गो थ्रू होते रहिए उससे, तो आफ्टर 10-15 रीडिंग वो चीज़ें आपके दिमाग में समहाउ कहीं ना कहीं बैठ जाती हैं और आप उसको एग्जाम में रेप्लिकेट कर लेते हैं। सेम गोज विद दी मुहावरा पार्ट। और फिर एक पोर्शन इसमें होता है जिसमें आपको लेटर लिखने होते हैं। तो लेटर के जो मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स में अलग अलग टाइप के लेटर्स लिखे जाते हैं, लाइक ऑफिशियल लेटर, देर इज समथिंग कॉल्ड परिपत्र, देर इज समथिंग अधिसूचना, इस टाइप की कुछ चीज़ें हैं। तो इन सभी के एक डेफिनेट फॉर्मेट होते हैं।
तो इस फॉर्मेट को हमें याद करना होता है और इन सब की एक छोटी छोटी डेफिनेशन तैयार करनी होती है कि परिपत्र क्या होता है, सरकारी पत्र क्या होता है। तो यहाँ से इस फॉर्मेट को आप याद कर लेंगे और फॉर्मेट की प्रैक्टिस कर ली तो ये वाला क्वेश्चन भी इजीली हो जाता है। तो आप ग्रामर वाले पोर्शन में थोड़ा बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और ये लेटर वाला क्वेश्चन जो होता है ये तो फ्री का मार्क्स होता है। अगर आपको फॉर्मेट याद है तो आप 10 नंबर बहुत आराम से पा जाएंगे। पैराग्राफ वाले मार्क्स भी इजीली आप गेन कर सकते हैं। बस ये है कि आप थोड़ी सी जो राइटिंग में जो मिस्टेक्स हो रही हैं उसको अवॉइड करने की कोशिश करिए, क्योंकि वहां पे एक बैड इंप्रेशन जाएगा और उसके आपके मार्क्स कटेंगे, क्योंकि वो हिंदी लैंग्वेज का पेपर है। तो वहां पे ग्रामर और जो आपकी राइटिंग में मिस्टेक्स हैं उन सबको काउंट किया जाएगा, तो वहां पे आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो इन मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए डेली बेसिस पे 10-15 मिनट लिखिए और कोई हिंदी का न्यूज़पेपर, हिंदी की कोई नॉवेल, हिंदी की कोई बुक या कोई कोई भी राइटिंग जो कोई भी बच्चों की स्टोरी वाली होती है वही पढ़ लिया। तो वहां से आपको थोड़े बहुत वर्ड्स मिल जाते हैं जो एग्जाम हॉल में अचानक से क्लिक नहीं करते हैं। तो ये कर सकते हैं हिंदी के लिए। और अभी नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात की जाए अबाउट एसे, तो एसे में क्या करना चाहिए? व्हाट इज योर स्ट्रेटेजी फॉर द एसे एंड हाउ शुड वन गेट प्रिपेयर्ड फॉर इट? For the essay, whatever we are preparing for the GS, we can replicate them in our essays. तो ऐसे GS में जो भी पॉइंट्स हैं वो ऐसे के लिए फॉर्डर मटेरियल की तरह हमारे प्रिपेयर हो जाते हैं। और कुछ जो रिकरेंट थीम्स हैं जो हर बार एग्जाम्स में पूछी जाती हैं उनको हम उनके लिए एक ब्रॉड स्ट्रक्चर प्रिपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वुमेन रिलेटेड इश्यूज, एजुकेशन रिलेटेड इश्यूज, हेल्थ, इन्वायरमेंट रिलेटेड इश्यूज। देन देर यूपीपीएससी में एक लिटरेचर से रिलेटेड एसेज पे हमेशा ही कुछ पूछा जाता है, रिलेशन बिटवीन लिटरेचर एंड सोसाइटी, हाउ लिटरेचर हेल्प्स इन द इवोल्यूशन ऑफ द सोसाइटी। इस टाइप के टॉपिक्स हमेशा यूपीपीएससी में पूछे जाते हैं। तो इन सभी पे हमें एक ब्रॉड स्ट्रक्चर प्रिपेयर कर लेना है, उससे रिलेटेड कुछ डेटा, उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स, इन टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस, कुछ केस स्टडीज को हम पहले से प्रिपेयर करके रखेंगे तो उसको अपने एसे के आंसर्स में हम मेंशन कर सकते हैं। And then the other thing about essay is try to make your essays multi-dimensional. Do not stick to only one dimension. How you will find multi-dimensions in your essays is like you can जो भी टॉपिक आपको दिया है वो उससे रिलेटेड आप उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, इफ यू कैन फाइंड एनी हिस्टोरिकल रिलेशन टू दैट essay, तो वो आप अपने essay में मेंशन करिए। देन आप उससे रिलेटेड कोई पॉलिटिकल डायमेंशन हो गया, सोशल डायमेंशन हो गया, इन्वायरमेंटल डायमेंशन, इकोनॉमिक डायमेंशन एंड समथिंग रिलेटेड टू एथिकल डायमेंशन ऑफ दैट टॉपिक, ये सारी चीजें आप लिखेंगे तो आपका एसे जो है ये थोड़ा मल्टी डायमेंशनल होगा। ट्राई टू मेंटेन अ गुड फ्लो इन योर एसे। आपकी जो लैंग्वेज होनी चाहिए बहुत ही ल्यूसिड सी होनी चाहिए, और जो डिफरेंट पैराग्राफ, और अपने एसे को छोटे छोटे पैराग्राफ्स में डिवाइड करना है, और जो दोनों दो पैराग्राफ्स हैं उनके बीच में प्रॉपर कनेक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि एक पैराग्राफ लिखा हो और जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स है। ट्राई टू मेक इंटर कनेक्शन बिटवीन योर डिफरेंट पैराग्राफ सो दैट योर एसे इज हैविंग अ नाइस फ्लो। राइट। तो अभी मुझे बताइए, यू नो अबाउट द 4 पेपर्स ऑफ जनरल स्टडीज जो आते हैं इसके बाद, पेपर 1, 2, 3, 4, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है एंड हाउ शुड वन गो अबाउट प्रिपेयरिंग दीस 4 सब्जेक्ट्स? या डेफिनेटली लाइक प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन ज्यादा आइसोलेशन में नहीं होती है, सब एक सिंक में ही रहते हैं। एंड इफ द अभी क्योंकि यूपीपीएससी ने रिसेंटली लाइक पास्ट 2 और 3 इयर्स इन्होंने यूपीएससी का पैटर्न फॉलो किया है। सो व्हाट हैपेंस इज दे स्टिक, आई मीन दे वेरी स्ट्रांगली स्टिक टू द सिलेबस। सिलेबस में जो टॉपिक मेंशन है वो डायरेक्टली वही टॉपिक पूछ देते हैं। फॉर एग्जांपल जीएस1 में रीजनलिज्म लिखा है तो वो सीधे पूछ देंगे व्हाट इज रीजनलिज्म, व्हाट आर इट्स प्रोज एंड कॉन्स। तो मेक श्योर कि जो चारों पेपर्स हैं उनके सिलेबस में जो पॉइंट्स लिखे हैं उन सारे पॉइंट्स से आपके पास 2 से 3 पेजेस की नोट्स प्रिपेयर रहे पहले से, ताकि उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आप उस पर आंसर दे दें। सो फर्स्ट थिंग अबाउट ऑल द 4 पेपर्स इज दिस। And if we go paper wise, so if we look at the GS1 paper, it is more or less very static kind of paper. यहाँ पे ज्यादा करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस पूछने की मतलब ज्यादा चांसेस रहते नहीं है, बिकॉज हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, देन वन इज इंडियन सोसाइटी एंड ज्योग्राफी। और ये जो है हमारा काफी हद तक प्रीलिम्स के साथ ओवरलैप कर रहा होता है। कुछ ही टॉपिक्स हैं जो नए हैं, लाइक वर्ल्ड हिस्ट्री है और एक इंडियन सोसाइटी है। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी जो हमने प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर किया है उसी को कर लेंगे, उसको थोड़ा सा एनालिटिकल वे में, थोड़ा आर्ग्यूमेंटेटिव वे में हमें प्रिपेयर कर लेना होगा। वर्ल्ड हिस्ट्री अगर हम देखें तो इट्स सिलेबस इज वेरी वास्ट बट इट्स वेटेज इज वेरी लो। सो
कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस थोड़ा सा कम हो जाता है, बट इट डजंट मीन कि हम इसको पूरी तरीके से छोड़ के जाएंगे. So what we can do is the major themes which are there in world history, like the World War One, World War Two, then the Industrial Revolution phase, impact of the Industrial Revolution. Then there is role of Hitler in World War Two. Then there is Nazism and fascism, unification of Germany, French Revolution, American Revolution. These are the broad dimensions, broad themes in the world history. सिर्फ इनको अगर हम कवर कर लें तो somehow हम आंसर्स अपने वहां पे लिख देंगे मेंस के एग्जाम में. सेम गोज फॉर दी पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री. इसमें भी कुछ जो ब्रॉड थीम्स हैं, लाइक वॉर विद चाइना, वॉर विद पाकिस्तान, 3 वॉर्स विद पाकिस्तान, देन द लैंड रिफॉर्म्स, एंड देन द एरा ऑफ द नेहरू, पंडित नेहरू जी, देन इंडिया फॉरेन पॉलिसी इन हिज एरा. और इस टाइप के जो पोर्शन है, ये जो ब्रॉड थीम्स हैं, और इंडिया इकोनॉमिक पॉलिसी, ये पोर्शंस हम प्रिपेयर करेंगे. इसमें ज्यादा पॉलिटिकल जो एरियाज हैं, इसमें पॉलिटिक्स पे नहीं जाना है, बस हमें मेजर थीम्स जो हमारे एग्जाम से ओरिएंटेड है उनको कवर करना है. इंडियन सोसाइटी के लिए विजन आईएएस के वैल्यू एडेड मटेरियल्स काफी अच्छे हैं, तो इनको हम देख सकते हैं. इसमें सारे ही टॉपिक्स उन्होंने काफी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किए हैं. और जो कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, लाइक पॉपुलेशन है, अर्बनाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज हैं, रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं. इन पे 2-3 पेजेस की अगर हम नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे तो काफी अच्छे से आंसर्स फाइनल एग्जाम में लिख सकते हैं. एंड ट्राई टू add some maps, some figures in the geography answers and even in the history answers. तो उससे थोड़ा वैल्यू एडिशन हो जाता है हमारे आंसर्स में. ज्योग्राफी को थोड़ा सा हम इन्वायरमेंट के साथ भी लिंक करके लिख सकते हैं. ज्योग्राफी में वो थोड़े बहुत करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं. फॉर GS2 देयर आर 3 ब्रॉड सब्जेक्ट. One is polity, the other one is governance, and the third one is international relations. So for international relations, विजन आईएएस की मेंस 365 एक ईयरली कंपाइलेशन आता है, जिसमें इंडिया का मेजर कंट्रीज जो हैं वर्ल्ड ओवर में, उनके साथ रिलेशन बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में कवर रहता है. तो हम पूरा इंटरनेशनल रिलेशन जो है वहीं से कवर कर सकते हैं. और इंटरनेशनल रिलेशंस में भी अगर हम देखें तो इंडिया एंड इट्स नेबरहुड का एक टॉपिक है. तो इंडिया का अपने नेबरहुड के साथ जो भी इश्यूज हैं वो मोर और लेस सिमिलर ही हैं, कि बॉर्डर डिस्प्यूट का एक इशू है, देन इंडिया का एक बिग ब्रदरली एटीट्यूड आ जाता है. तो इस टाइप की जो चीजें हैं ये काफी सिमिलर सी हैं. तो इस टाइप के जो हैं आप मतलब थोड़ा कंसेप्चुअल बेसिस पे प्रिपेयर करेंगे तो थोड़ा इजी रहेगा आपके लिए, रेदर देन फैक्ट बेस्ड इसको याद करने की कोशिश करना. एंड देन पॉलिटी में तो हमने जब प्रीलिम्स का प्रिपरेशन किया है, तो प्रीलिम्स के प्रिपरेशन में हमने बहुत सारे फैक्ट्स याद कर लिए हैं. अब उन्हीं फैक्ट्स को हमें थोड़ा सा लॉजिकल वे में अपने आंसर्स में मतलब अपने आंसर्स में उनको रख देना है. और गवर्नेंस की अगर हम बात करें तो गवर्नेंस के बहुत सारे जो पोर्शंस है वो हमारे एथिक्स के साथ इंटरकनेक्टेड हैं. तो जब हम एथिक्स की प्रिपरेशन करते हैं तो गवर्नेंस के टॉपिक्स काफ़ी हद तक कवर हो जाते हैं, लाइक ट्रांसपेरेंसी, RTI, देन रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी. ये सारे टॉपिक्स हमारे GS4 के साथ ओवरलैप करते हैं, तो वहाँ से प्रिपेयर हो जाते हैं. और GS2 में एक और पोर्शन रहता है हेल्थ, एजुकेशन, देन सोशल एम्पावरमेंट, वेलफेयर स्कीम्स फॉर द वल्नरेबल सेक्शंस. तो इनके लिए द बेस्ट सोर्स आई हैव फाउंड इज देयर इज अ रिपोर्ट बाय नीति आयोग, इट्स कॉल्ड इंडिया एट 75. तो इसमें ये सारे टॉपिक्स जो हैं ये बहुत ही अच्छे तरीके से कवर्ड हैं. आई मीन दे हैव प्रेजेंटेड इट इन अ नोट्स फॉर्मेट, लाइक इट्स अ ब्लेसिंग फॉर द UPSC सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट. उन्होंने बिल्कुल ही नीति आयोग ने नोट्स के फॉर्मेट में ये सारे टॉपिक्स पे दे रखा है, आप यहाँ से इन चीज़ों को कवर कर सकते हैं. एंड या फॉर द GS2 ट्राई टू ऐड some of the Supreme Court judgments also in your answers. And for GST, it's more or less dynamic paper and it's a huge syllabus. For the economy part, I guess the infrastructure and the agriculture, again, I would go for the India at 75 report. They have compiled all the issues related to these sectors very comprehensively. So that could be the only source for these topics. And for other topics of economy, you can, I mean, anyone can refer to the economic survey. Both released by the central government as well as the state government. That could be sufficient for economy preparation. And then for the internal security, again one can go for the mains 365. They cover it in a comprehensive way. And for environment and science and tech also, I guess mains 365 would suffice.
So and disaster management, for disaster management, तो इसके लिए आप टेक वन डिजास्टर एट अ टाइम एंड देन सी कि ये डिजास्टर इंडिया में किन किन पोर्शंस में ज्यादा है, इंडिया की वल्नरेबिलिटी क्या है विद रिस्पेक्ट टू दिस डिजास्टर. And next thing is ethics, which is quite confusing for a lot of people. So, and there are a bit myths also, like you don't need to read anything for ethics. ये तो ऐसे ही हो जाता है, बस definition याद करके चले जाओ, something like that. So नहीं, एक reading for the entire topic is very necessary so that you can have a proper understanding of the entire syllabus. एंड इसमें बहुत सारे टर्म्स लिखे होंगे, इन सारे टर्म्स की आप एक सिंपल डेफिनेशन कोई भी बंदा तैयार करे, लाइक ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, समथिंग लाइक दैट, एंड ट्राई टू ऐड 2 or 3 एग्जांपल्स, वन फ्रॉम योर ओन लाइफ और फ्रॉम एन एवरीडे लाइफ or something related to current affairs, and see if any administrator or any world leader or national leader has done something related to that field. So examples यहाँ पे हमारे important हो जाते हैं, and try to solve the previous year questions of UPSC. So अभी बात की जाए about the optional subject, तो आपने इसके लिए संस्कृत चूज किया था. So what was the reason behind this choice? And for Sanskrit, what are some of the resources that you refer to that will help the aspirants जो आगे चल के संस्कृत they want to take as an optional subject? तो इसके बारे में थोड़ा बताइए. इसका जो सिलेबस है that is very, I mean, I can't say कि बहुत ही छोटा है, but it is limited and very well defined syllabus. And it takes around 2 or 3 months to cover the entire syllabus. And then once you are done with the entire syllabus, you can revise it in like 1 week or 10 days at max. And if we talk about the resources, so yeah, there is paucity of resources in Sanskrit option because ज़्यादा candidates लेते नहीं हैं. एक 2015 में शशांक त्रिपाठी सर थे जिन्होंने 3rd रैंक 5th रैंक थी शायद आई गेस उनकी, उनका संस्कृत ऑप्शन था. उन्होंने अपनी नोट्स जो है वो अपने ब्लॉग पे शेयर करी है, जो कि काफी हेल्पफुल थी फॉर द लिटरेचर पोर्शन. there is a book by a writer called Uma Shankar Sharma and Rishi, and it is called the Sanskrit Sahitya Ka Itihas. So this book will cover the entire literature portion, theoretical portion of the literature. And then in the literature itself, there are some questions जिसमें they write a shlok and then they ask for the elaboration of the shlok. तो इसके लिए द हिंदू कॉलेज में एक प्रोफेसर पढ़ाते हैं, डॉक्टर राजेंद्र कुमार सर. उन्होंने एक बुक लिखी है स्पेशली फॉर द सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट, जिसमें उन्होंने जो भी क्वेश्चंस श्लोक वाले हैं उन्होंने उन सारे श्लोक को कंपाइल किया और उनकी बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेनेशन दी है. सो दैट बुक कैन बी यूज्ड फॉर दैट पोर्शन ऑफ द सिलेबस, द श्लोक पोर्शन. ग्रामर के लिए किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का हम मटेरियल पढ़ सकते हैं. एंड एक पोर्शन संस्कृत लिटरेचर में लिंग्विस्टिक का आता है, जिसमें हमें पढ़ना होता है डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज फैमिलीज क्या हैं, इंडो आर्यन लैंग्वेजेस, देन प्राकृत लैंग्वेज, पाली लैंग्वेज, and the difference between the Vedic Sanskrit language and classical Sanskrit language. For this portion, there is a book by Kapil Dev Dwivedi, जिसमें उन्होंने भाषा विज्ञान के नाम, इस टाइटल के नाम से है उनकी बुक. और एक पोर्शन रहता है हमारा फिलोसफी का, इंडियन फिलोसफी मोस्टली उसमें रहती है. तो इंडियन फिलोसफी के लिए 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, पतंजलि आईएएस और एक है अपना मित्र आईएएस, जो फिलोसफी ऑप्शनल की कोचिंग कराते हैं सिविल सर्विसेज के लिए. तो उनकी जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो गूगल पे अवेलेबल हैं. किसी एस्पिरेंट ने अपनी नोट्स शेयर करी थी, तो मैंने वो पीडीएफ डाउनलोड करी थी और वहां से अपना फिलोसफी का पोर्शन प्रिपेयर कर लिया था. और ये नोट्स मार्केट में भी मिल जाती हैं, तो मार्केट से भी कोई भी परचेज करके फिलोसफी का पोर्शन कवर कर सकता है. जो संस्कृत ऑप्शनल के आंसर्स हैं वो हम हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, जो भी हमारा मीडियम होगा. सम पीपल आर कंफ्यूज्ड कि हमें संस्कृत ऑप्शन में सारे आंसर संस्कृत में लिखने होते हैं. ऐसा नहीं है, दोनों पेपर मिला के हमें सिर्फ 3 क्वेश्चन हैं जो संस्कृत में लिखने होते हैं. एंड मैं ये आई मीन संस्कृत ऑप्शन इज अ वेरी गुड ऑप्शन. यस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, but now selected peoples are trying their best to I mean create a community of selected aspirants, and I'm also trying to do something related to this and see how I can help the aspirants. Right, thanks for sharing that about Sanskrit, Siddharth, and it's great to see that you're taking this up as an initiative to help students.
राइट, तो ये तो हो गई आपकी मेंस की बात। अभी बात करते हैं आपकी इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में। इसके बारे में थोड़ा बताइए, हाउ डिड यू गो अबाउट प्रिपेयरिंग फॉर इट, एंड व्हाट वर सम ऑफ द क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड टू यू ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द इंटरव्यू, बिकॉज अब तक तो दे हैव जज्ड योर नॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीलिम्स एंड द मेंस, तो अभी इट इज मोर टू डू विद योर पर्सनालिटी, राइट? दैट इज मोर इम्पोर्टेंट व्हेन इट कम्स टू द इंटरव्यू. Yeah, as you rightly said, interview is more about your judgment of your personality rather than your knowledge, because they have already did that in the films and the main stage. So, I mean, for the interview, what is more important is you represent the real self during the interview stage, and then interview stage is more about how you present yourself rather than inculcating more and more knowledge. आप वहाँ पे for the 15 minutes you cannot create a new self in the interview hall. So it is a culmination of your entire personality, whatever you have inculcated since your birth. So ये एक चीज है. और जो हमारी मेंस की प्रिपरेशन है, प्रीलिम्स की प्रिपरेशन है, यहाँ से हम थोड़ी बहुत जो भी हमने नॉलेज गेन की है उसको यूज करके आप इंटरव्यू में अपने आंसर्स दे सकते हैं. बस आपको जो जिस तरीके से आप उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है. ट्राई टू बी मोर फॉर्मल and don't be afraid about the medium in which you are expressing yourself. Don't try to elaborate your answers too much, because after 15 or 20 seconds they will stop you and they will ask the other question. And try to prepare a bit about yourself, about your background, like from the city from which you belong. उस city से related आपने चीजें, उसका historical background, आपकी city का वहाँ पे कौन सी घूमने की चीजें हैं. Try to have a sound knowledge of your optional, because if you won't be able to answer your optional questions, then it will like put a bad impression कि आप मेंस क्लियर करके आ रहे हो और आपको अपने ऑप्शन के बारे में नहीं पता है. And if I talk about my interview experience, so my interview lasted for like 20 minutes or so. They started with this question itself कि you are having an engineering background from IIT, and then you are taking up Sanskrit as an optional. So it's like the two shores of a river, and why you are doing this. So they put it in a quote format, something like that. So I think I also replied them in a quote format, like that's the beauty of our country. It's full of diversity, and I guess I am embodying that diversity in my civil services preparation. So they were quite happy and they were laughing. And then some questions were related to my civil engineering background. I prepared my interview in English language, but the interviewer started asking questions in Hindi. So my entire interview was in Hindi language itself. Right, Siddharth. So thanks a lot for sharing a little bit about your interview experience and some of the questions that you were asked. I'm sure it will definitely help जो भी aspirants है. I'm sure they've taken note of it. तो ये थी आपकी overall story about your preparation, and thanks for sharing so much in detail with us, be it about the prelims, the mains and the interview. तो ये तो थी थोड़ी serious बात. अभी आते हैं एक fun segment पे, which on CTwT we call the rapid fire round, जहाँ पे मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा and you can answer them in your very own way, जैसे भी आपको सही लगे, but make sure that they are rapid and full of fire, as they say. Your first question: what lifts your mood when you are down? Friends and 2.5 men. Right. Who is someone who really inspires you? Mahendra Singh Dhoni. And why is that? Because he came from a middle class family background, and then he is very cool and calm, and he handles the tough situations very well. So all these qualities, and he is very humble. So that's why I admire him a lot. So if you were given the opportunity to become the Prime Minister of India for one day, आप क्या changes लाते? I don't think it would be possible to bring a lot of changes in one day. But yeah, one thing the one thing which I'll focus upon is the education sector, and especially in the education sector, the primary education. So अगर आप पे एक autobiography लिखी जाए, what would be the title of it? Yeah, so the calm and the composed individual. आपके पास ऐसी कौन सी चीज है जिसको आप
prized possession consider करते हैं, जो आपकी favorite है? My mother. So Siddharth, those were some fantastic answers right there, very well answered. अभी बात की जाए आपके फ्यूचर के बारे में. So now that you're going to become a deputy collector very soon, तो आगे के 5-10 years के आपके क्या plans हैं? For the 5-10 years, I mean, for the next 2 or 3 years, I'll try to learn the different roles and responsibilities which I'm going to take as a deputy collector. So, और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से वर्क करता है, हाउ द पॉलिसीज आर गेटिंग इम्प्लीमेंटेड इन द ग्राउंड एंड हाउ द डिसीजंस आर टेकन and how to work as a team member. So I will try to learn all those experiences so that I can be a good administrator. And once I have learned things how the administration work, I would try to bring some changes in which the administration is working. Like I will try to make the administration more accessible to all the sections of the society, especially the people who are from the marginalized background, so that they can avail all the benefits which the government is trying to give them. And I will also try to make them aware about the different benefits which they can avail from the different government schemes. And one thing which is in my mind, which I would like to do is I would try to in whichever area I would be working, I would try to make the villages more autonomous and more self-sufficient, like smart cities which are getting developed. I would like to make smart and model villages, which also a scheme of the government, Adarsh Village Yojana, something like that. So I would also try to make those changes so that people in the villages become more prosperous and more empowered. And also I will continue my civil services preparation too. So I will try to plan my schedule in such a way that I could get some amount of time for that, for my preparation also. So I guess these are some of my plans for the future. Let's see how successful I could be in all those plans. Right, it's wonderful to know that you have such great and noble plans, and we wish you the very best so that you can achieve those. So Siddharth, we have this ritual here at Chamomile Tea with Toppers called Tag a Topper, जहाँ पे आप किसी का नाम बता सकते हैं हमें, who just like you is also a rank holder and has cleared the examination. We can call them on our show and interview them. So tell us a little bit. So you can just give us a name. We haven't. I mean, my batchmates we haven't met yet, but I guess I would like you to invite the topper of our batch. He is the rank one holder. His name is Vishal Sharaswat. So maybe you can call him for the interview. And also the individual who tagged me, his name is Shivam Singh. He got 38 ranks. So you can interview him too. Okay. So Vishal and Shivam, our team will reach out to you soon, and hopefully we can do an interview with you soon and get to know your journey and your preparation strategies as well. Right. So Siddharth, we're almost at the end of the show. मैं चाहता हूँ कि before leaving आप एक message या advice दें सारे aspirants को जो ये exam लिखने वाले हैं. Anything that will motivate them. Please go ahead. Yeah, I would like to say all the future aspirants that don't get bogged down by your failures and don't get demotivated. And it's saying that hard work always pays off. So keep striving for the success. Work hard, be dedicated, be honest with your preparation, and the perseverance, honesty, and hard work always pays off. So yeah, just keep striving for the success, and one day you will definitely succeed, like me. Right. Thank you, Siddharth, for that wonderful advice. Thanks for those lovely words. And thank you, last but not the least, for being with us on Chamomile Tea with Toppers. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके and listening to your story, your journey, and your preparation strategies. And we here at Unacademy wish you the very best with your career going forward and hope you achieve all the success that there is to achieve. Yeah, thanks a lot. It was a nice experience for me too. So that was Siddhartha Pathak, ladies and gentlemen, who shared a little bit about his journey and his preparation strategies for all your aspirants out there. And I'm sure that it will go a long way in helping you in your journey in achieving your dreams. If you have any questions for him, please do add them in the comments
comment section below. We will be back soon with yet another episode of Chamomile Tea with Toppers. Until then, do take very good care of yourselves and stay safe.